In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum, dear viewers. I am Imtiaz with an introduction to direct and indirect narration. This class will serve as an introduction to the series of e-classes on direct and indirect speech. We can report the speaker's words in two different ways. So we have two ways to report things. Two ways. Number one, to report the exact words of the speaker. To report exact or actual words of the speaker. Okay? And when we make use of exact words, actual words of the speaker, it's called direct speech. It's called direct. इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स के डिट्टो जो अल्फाज उसने यूज किए उन्हीं को रिपीट करते हैं, उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. वी हैव अनदर वे. हमारे पास एक और रास्ता है, एक और तरीका है. सो वी कैन report the content of the speaker's message without repeating his actual words and making certain changes, due changes. उसी को हम कहते हैं indirect speech. So we can report content of speaker's message without repeating his actual words with certain changes. And इसी को हम कहते हैं indirect speech. Indirect speech or reported speech. Reported speech. To illustrate this concept clearly, we shall take an example of a boy and a girl. Okay, let's have a look. We have a girl here. Her name is Insha. Insha speaks. She's a speaker. She says something to Adil. वो Adil को कुछ कहती है. Adil's name of a boy, and he is listener. He is listener. वो उसकी बात सुनता है. ठीक है. Insha says. Insha Adil से कहती है, I am well now. अब मैं ठीक हूं. तो ये actual words of the Insha के actual words है. Exact. Now Adil becomes from listener. He becomes a narrator. He becomes a reporter. He narrates to us. उसकी बात, Insha की बात हमको रिपोर्ट करता है. तो उसके पास दो तरीके हैं. वो या एक्चुअल वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है डायरेक्ट स्पीच का, या इनडायरेक्ट वे यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल कर सकता है. सो इफ ही मेक्स यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच तो वो क्या कहेगा? ही विल से इंशा सेड आई एम वेल नाउ. उसने एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया. तो यहाँ पे हमने जो एग्जैक्ट वर्ड्स है, जो डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा. वी पुट इट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. तो एक्चुअल वर्ड्स को, डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं. तो इसने एग्जैक्टली वर्ड्स का इस्तेमाल किया, तो इसने डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया. आदिल के पास एक और तरीका है. तो ही विल से इंशा सेड. यहां पे जो इन्वर्टेड कॉमास है, दे आर नॉट यूज्ड, दे आर रिमूव्ड हियर. इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल. सो इंशा सेड. तो इन कॉमास को हमने, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम दैट यानी कि कंजक्शन का इस्तेमाल किया. सेड दैट. आई यहां पे पर्सनल प्रोनाउन है, इट विल चेंज टू शी. यहां पे इंशा गर्ल है तो ये शी में चेंज होगा. तो आई
ये यहाँ पे पर्सन चेंज हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 मेजर चेंजेस टेक प्लेस होती है। फर्स्ट चेंज इज पर्सन चेंज, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं। आई इज चेंज टू शी, देखिए आई कैसे चेंज हुआ शी में। सेकंड, शी एम, आई एम वेल नाउ, एम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, इट विल चेंज टू पास्ट सिंपल। यहाँ पे वी वन है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, इट विल चेंज टू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी एम विल चेंज टू वॉज, तो यहाँ पे सेकंड चेंज हुई, दैट्स टेंस चेंज। टेंस चेंज, प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल। Well, now is adverb here, it will change to then. तो अगेन यहां पे एडवर्बल चेंज होता है। तीसरी चेंज जो मेजर चेंज है वो एडवर्बल चेंज है। तो यहां पे Adil reported what Insha said without repeating her actual words. She reported the कंटेंट ऑफ हर मैसेज, उसकी मैसेज का कंटेंट उसने हम तक रिपोर्ट किया, और उसने कुछ ड्यू चेंज यहाँ पे सर्टेन चेंजेस की, जैसे पर्सन चेंज किया, टेंस चेंज किया, एडवर्ब चेंज किया। इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वी शैल डिस्कस दीज चेंजेस इन द फोर्थकमिंग क्लासेस। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. We shall take one more example to understand what direct and indirect speech is. Father said to me, I wrote a book. I wrote a book yesterday. देखिए, father told me, जो father said to me जो है, it is, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लास। इट इज रिपोर्टिंग क्लास इसको कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो फादर है इट इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पे जो सेड है इट इज रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहां पे। ठीक है, नाउ फादर इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। यहां पे जो मी है इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, here we shall restrict only to assertive sentence. यहां पे हम assertive sentence की बात करते हैं, हम इनको कैसे चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। assertive sentence जो होता है, assertive sentence, it's a sentence which gives statement, ये statement देता है। it can be affirmative और नेगेटिव, ये affirmative भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर है, फर्स्टली वी हैव सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली वी मेक यूज ऑफ वर्ब, यहां पे वर्ब का इस्तेमाल होता है। देन फाइनली वी हैव ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, जब हम यहाँ पे असर्टिव स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, अगर हमें स्टेटमेंट को एक असर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इफ said is followed by, if reporting verb is followed by object, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है तो said is changed to told. if reporting verb जो है if it is followed by object then said changes to told, ये told में चेंज होता है। उसके बाद हम that कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, so let's convert it. Father told, तो said will change to told, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। सो फादर टोल्ड मी, यहाँ पे सब, यहाँ पे दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करें क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, ये स्टेट में यहाँ पे हम दैट का यूजुअली इस्तेमाल करते हैं सब कंजक्शन का। सो फादर टोल्ड मी दैट आई, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इट विल चेंज टू ही। फादर यहाँ पे ही है, सो यहाँ पे दैट ही wrote, past simple it will change to past tense, past perfect, that he had written a book
Yesterday, it will change to the previous day. The previous day. तो यहाँ पे अगेन 3 मेजर चेंज हुई. यहाँ पे पर्सन चेंज, ही आई चेंज टू ही, देन रोड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज अ पास्ट सिंपल, इट चेंज टू पास्ट वर्ब, हैड प्लस रिटन, V3 का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे. Then yesterday adverb change, it changed to the previous day. So this was an introduction to direct and indirect narration. To understand this concept clearly, you should follow my forthcoming videos on direct and indirect narration. In the coming lectures, we shall try to understand how different changes like tense change, adverb change, or person change takes place when we convert sentences from direct to indirect speech. We shall also try to comprehend how different types of sentences are converted from indirect to direct to indirect sentences. Then finally we shall also talk about the exceptions. What are the exceptions to these rules, to these tense change, where these tenses don't change? To revise briefly, direct speech is when we make use of, when we report the exact words of the speaker. This is called direct speech. But when we report the content of speaker's message without repeating his exact words, with certain changes, that's called indirect speech. See you in the forthcoming videos. Till then, goodbye.